ये एक मेरे लिए एक नई चीज़ है। यू आर इन नासा? यस। पहले पैदल नहीं गया हूँ बेसिसार, इमेजिनेशन से कम लोग हैं। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज तारीख है, ओके आज 23 तारीख है और कल फ्राइडे है, सो आज सेकंड लास्ट डे है हमारा। तो हमारी मॉर्निंग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है इस टेबल पे। सो आप देख सकते हैं कि सब लोग खाना खा रहे हैं, तो बस मैं भी उन लोगों को ही ज्वाइन करूँगा। सो गाइस, हम लोग यहाँ डेली नई नई रेसिपी तैयार करते हैं। सो हम टॉकिंग दैट एवरी डे हियर वी इन्वेंट न्यू रेसिपी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग के पास है पीनट बटर एंड ये एक मेरे लिए एक नई चीज़ है, क्योंकि इससे पहले मैंने ट्राई नहीं की थी। अब विलियम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पीनट बटर को निकालना है, लाइक दिस, एंड आप इसको कुछ इस तरीके से खाते हैं और उसके बाद आप लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। सो दूसरा हमारे पास इंग्रेडिएंट है गुड डे। विल टेक दिस वन। Your parents will be like, okay, it's because of you, or maybe I'll get some brand. इसके बाद हम लोग इसे ऐसा चिपकाएंगे और बस आप चाहें तो ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं, बनाना भी ऐड कर सकते हैं। There are a lot of options there. Delicious. And you forgot the version with the bread. तो बस यही है सुबह का नाश्ता, दाल भात की अमेजिंग न्यू डिस्कवर्ड रेसिपीज। And you forget this one. So this is the second person. Actually, I am the third person who got addicted. Who was first? You. I'm simply a controlled addict. First were Vicky and but I'm addicted. Oh, Okay, this is new. okay. Oh my God, that's amazing. That's it. Guys, खाना पीना अब हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है बर्तन धुलना। तो कभी कभी मैं धुलता हूँ, कभी कभी कोई और धुलता है, तो इस टाइम मैं धुल रहा हूँ बर्तन। तो आई विल वॉश समथिंग फर्स्ट। तो ये जगह है जहाँ पे हम लोग जिस दिन धूप आती है उस दिन बैठते हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ हम तीन ही हैं, क्योंकि बाकी लोग स्कूल हैं। थोड़ी देर पहले मैं भी अंदर बैठ के एडिटिंग कर रहा था, बट अब मुझे ठंड लग गई अंदर काफ़ी, सो मैं बाहर आ गया। और इलेक्ट्रिसिटी भी आज थोड़ा फ्लक्चुएट हो रही है। हालांकि वैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, और मैं फर्स्ट दिन जब आया था तब भी ये इशू था, लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा था, बट उसके बाद फिर वो फिक्स हो गया। बस यहीं से कुछ नज़ारे का आनंद हम लोग लेते हैं। सामने पहाड़ हैं, अन्नपूर्णा है। तो इस समय मेरे साथ हैं जेरार्ड, जो कि हैं कैटालोनिया। इट्स एन आइलैंड? No, नो, it's a piece of land from Spain. स्पेन, In the northeast of Spain. ओके। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक ज़मीन का टुकड़ा है कैटालोनिया, वहाँ से हैं जेरार्ड। या दैट इज कैटालोनिया, दैट्स द स्पेलिंग एक्चुअली। सो यू आर अ फुटबॉल प्लेयर, स्पोर्ट्स टीचर? Yeah, sports teacher. स्पोर्ट्स टीचर, बट अभी उनके घुटने में थोड़ा सा इशू आ गया है। सो आफ्टर ऑपरेशन इट विल बी फाइन? Yeah, hope so. Since how much time you are traveling? I'm traveling for 3 months. Yes. 3 months and 2 or 3 days. Okay. And I spent some good time in Australia first. And the beginning of the plan was to spend there like 1 year. But then this occurred, so Yeah. I had an injury here playing football. तो गाइज, आप लोग बार्सिलोना को तो जानते ही होंगे अगर आप फुटबॉल फैन हैं। लियोनेल मेसी उनकी कंट्री की तरफ से खेलते हैं। Best player in the world. Best player in the world. Lionel Messi lovers just hit like. Is there anything, I mean, precautions or some kind of thing we should do while solo traveling? I mean, till now, what you experienced? Yeah. Well, I don't really like to plan a lot my trips, so my best tip I could give it to you is just open your heart, open your mind, and learn a lot from people, because you have a lot of things to learn. And इनसे मैंने एक चीज़ सीखी है, that was tortilla patata। ये एक स्पेनिश डिश है जो हमने उन्होंने स्कूल में बच्चों को सिखाई थी, लेकिन मैंने भी सीख ली। And yesterday you are making those omelets. Yeah, fried egg. ये फ्राइड एग पकाने का थोड़ा नया तरीका मेरे लिए, हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में इस तरीके से एग नहीं पकाया जाता है, जो कि बहुत ही डिलीशियस था। That was amazing time Thank you. with you. Thank you. So guys,
अब मैं दूसरा इंटरव्यू करने वाला हूँ स्टेफनी का, जो कि है जर्मनी से. How was your experience till now? It was a wonderful experience because I met so many people, and yeah, I really fell in love with these people because they are very warm-hearted, they are caring. Good experience. And since how long you are traveling? This time I am traveling for in altogether for 2 months. I traveled a lot, but but not like now. When I was after university, I immediately started a job and my career. So after a few years, I somehow felt regret that I didn't do it at that time. But when I was in university, we didn't have opportunities like Workaway, Airbnb, so it was a bit harder to travel. Yes. In 2014, 4 months which I spent in Australia and in New Zealand, and this was life-changing. So since that, 2014, I have seen every continent. I do a lot of road trips through Europe and USA. I went to weddings in India, a lot of things. So इन्होंने बताया कि 2014 में इन्होंने 4 महीने इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बिताए, और जो एक्सपीरियंस था इनका उसने इनकी थॉट को टोटली बदल दिया. और उसके बाद इन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करती हैं अलग अलग जगह. लास्ट टाइम 3 महीने पहले यू आर इन नासा. Yes. जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है. So how was the experience? So I went to NASA. It was my 40th birthday, and this is what I was always dreaming of since I was a kid. 40 years later, and we went there. Yes. And it was just breathtaking. And we were very lucky because we went there on Thanksgiving. Thanksgiving, yes. Which is one of the most important holidays in the USA. Yeah. So we had the whole NASA area nearly for us alone. Okay, everybody was home. Everybody was at home, so this was very pleasant. No queues. जब भी आप लोग सोलो ट्रैवल करते हैं, तो चाहे मेल हो फीमेल हो, हर पर्सन को डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने होते हैं. तो ऐसा ही एक चैलेंज जेरार्ड को फेस करना पड़ा था अभी जब ये ऑस्ट्रेलिया में थे. ओके जेरार्ड, टेल मी द स्टोरी. Well, was just a little incident I had my last night in Australia. I was capital city of Western Australia state, and I was eating sushi there alone with myself, and suddenly appears a guy, an Aboriginal guy, which I recommend you to read a lot of these people, Aboriginal, because we should learn a lot from them, but now they are in a situation that is not good for them. And well, the thing is that he came to me and he asked me for the time. So he was expecting me to take off the mobile phone and show him, but I didn't. I just said it was 10 to 10, something like that. And he was approaching me, then I felt like someone who was coming from behind, so I turned, I realized, and I just stand up and say what I want, and they just run away. The things that can happen to you anywhere, everywhere, so not 100% is going to happen to you, but sometimes maybe while traveling solo, you are getting experience, and you know where you can walk, and what you can do, what you can say, with who you can talk. But you don't have to be afraid of anything. You just have to be conscious what you're doing, because otherwise, if you're afraid of everything, you're not going to enjoy the travel. True. That's amazing. तो इनके साथ एक छोटा सा जो इंसिडेंट हुआ था, it was the night time. Yeah. And there were people? No people. Was no Okay. It was late night, so. Okay. So guys, last time जब मैं रात में ट्रक में लिफ्ट ली थी, तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का इंसिडेंट होते बच गया, क्योंकि जब हम लोग काठमांडू से पोखरा की तरफ आ रहे थे, तो पुलिस ने हमें लिफ्ट दिलवाई थी फाइनली. तो मेरे साथ उस समय शुभम भाई थे, वो तो सो गए थे, लेकिन जो ड्राइवर साहब थे वो काफ़ी ज़्यादा मेरे से सवाल कर रहे थे, फाइनेंशियल सवाल कि आप कितना कैरी कर रहे हो, क्या है एग्जैक्ट अमाउंट. तो आने से पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, एक सोलो फीमेल ट्रैवलर की.
उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई आपसे एग्जैक्ट ये सवाल पूछे, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली आप कितना कैरी कर रहे हो, कितने दिन रहने वाले हो, या फिर और भी बहुत सारा, क्योंकि इससे पहले जब मैंने नेपाल के महेंद्रनगर साइड से कई बार ट्रक वालों से लिफ्ट ली तो किसी ने मेरे से कुछ इस तरीके के सवाल नहीं किए, लेकिन वो जो भाई साहब थे वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके के सवाल पूछ रहे थे। उनके सारे सवाल मेरे से रिलेटेड थे, तो मुझे शक हुआ और सारी डिटेल मैंने गलत सलत बताई। फाइनली मेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं, बट आपको इस चीज़ की थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, खासकर रात के समय। जैसा कि पुलिस वालों ने मुझे कहा हिचहाइक ना करें, और भी कई ट्रैवलर से बात की जो हिचहाइकिंग करते हैं, उन्होंने भी मुझे रात के टाइम हिचहाइक करने से मना किया। फाइनली मैं रात के टाइम हिचहाइक नहीं करूँगा, हालांकि आपको पता है लास्ट टाइम मैं हिचहाइकिंग में फ़ेल हो गया हूँ, सो दोबारा ट्राई करूँगा। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है सुनसान जगह पे और रात के टाइम में। नाउ अब मैं स्टेफनी इट्स योर टाइम। सो स्टेफनी एक सोलो ट्रैवलर है और ये कुछ हमें बताने वाली हैं कि फीमेल्स को, गर्ल्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं वाइल ट्रैवलिंग सोलो। So you understand my question? No. Okay. I'm sorry. So the question is, what are the challenges did you faced while traveling solo as a female traveler, and what should we do? What precautions should we take to avoid any trouble kind of situation? Well, first is the question where you go. I mean, there are some countries, like for instance Nepal and India. When you have blonde hair, you're something, people notice you and people approach. In India, sometimes they touch you. So it would be my recommendation. Sometimes it's quite hard because you can't differ if they're just fascinated by your looks. Yes. Or if they see a cash cow, because you can't hide that you're from the Western world. Oh. So sometimes they follow you, and in a very I don't know the English word. Annoying. In a very annoying way. But I also have compassion for them, because I understand that they are just curious about my culture, and it depends. So when I feel very uncomfortable, Yes. I try to find groups, maybe groups of tourists, Yes. and I pretend to be one of them. When I am on my own, I try to hide my hair and cover myself in a scarf. Okay. Another good trick is when you're in a city. I mean, it's quite annoying because everyone tries to sell you something, and they always repeat, do you need a guide? I show you, I promise, I don't want to sell. So you hear the same stuff all the time, which is quite annoying. So the best trick for that is to say at the beginning, I don't speak English. Yeah, And that's it. that's So, great. and you pretend not to understand, and then They go away. Okay. So you, But in general, I mean, the people are very, very nice. But as a woman, you really have to trust your guts, your feelings, and I would never go out alone at night where I don't feel comfortable. Yes. In case of I feel uncomfortable somewhere, I try to find people I can talk to, and they go with me. But in general, I never had really bad experiences. Okay. But also, it's quite important to appear very confident. You meet way more nice people than bad people. That's true actually. But following is totally not okay. If I am curious about you, I will not follow you. I can speak to you. That's it. Yeah. So guys, किसी को ऐसे फॉलो करना बहुत ही गलत बात है, लेकिन अगर आप ट्रैवलर हैं तो आप इस चीज़ को जानते होंगे और आप ये चीज़ नहीं करते होंगे. They carrying yes a lot of stuff. तो यहाँ की जो लोकल ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से है. हर इंसान, मैन वुमेन, सब कोई हार्ड वर्क करता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो अभी आपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सुनी जेरार्ड एंड स्टेफनी से,
उम्मीद है आपको कुछ सवाल अगर मन में पैदा हो रहे हो तो ज़रूर बताएं, मैं इनसे पूछ के आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। So this is what does the thing is. Okay. She's going to do that. Wait.